today we will continue with our chapter networks. As earlier I told you what is the meaning of network and how many types of network exist. Okay, now today I will tell you what is the resources of the network, which is help to provide the networking system. Okay dear. Now as I told you that there are 4-5 parts of the networking like LAN, MAN, CAN, PAN. So they are different according only and only for their distance only. Okay, otherwise working area will be same for all the networks. Either you are talking about LAN or MAN or WAN or CAN or PAN. But working area is same, but according to the distance they are different. Okay, now today we will discuss about the resources of the networking. First resource, my dear students, is modem. As you know, modem means modulator. This is modulator which change to analog to digital and digital to analog. The work of modem is change digital to analog and vice versa. Okay, so this is the meaning of modem. Okay, somewhere you heard these terms. What is the meaning of modulation? Modulation means connectivity, where we have given the resources. If this is a resource, so definitely this will use for the networking. And how it is used for the networking? This is used for the networking with the help of modulation. Okay, now I am going to tell you, my dear students, how the modulation will give the function. Let us suppose we have one system over here. Okay, this is your computer system and another system I have over here. Okay, now my dear students, I want whatever the data is accessed over here should be here also. One thing I need to be clear, the modem doesn't mean that there is internet possibility. Modem means sharing for data. ओके, मॉडेम का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि उसमें इंटरनेट होगा. मॉडेम का मतलब है कि आप डेटा को शेयर कर रहे हो, चाहे वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कर रहे हो, चाहे आप इंफ्रानेट से नेट पे कर रहे हो. ओके, सो दिस इज द टू सिस्टम्स. ओके, एंड व्हेन आई पुट, इफ देयर इज अ सीपीयू ओवर हियर, so did you know there is every student know, I know that there is a modem facilities everywhere. Students know sorry, here we can put the wire here, and when we put that wire here also. Okay, can you see the link are same for the both these computer? If it is 1 and it is 2, so the link point are same for 1 and 2. If it is same, my dear students, so that means the data, any resources of networking can be shared. So whatever data is present in CPU1 can be shared by the CPU2. So that is known as a networking. Okay, and this term is known as a modulation. Okay, because that time this modem is working and help to share the data from one side to the another side. I hope you understood. Now we will discuss about internet. What is the meaning of internet? As a term clear itself, internet means talking about, we can talk about the international networking. International means it is wide in range. International networking, that is known as internet. When we share our data with the international level, means one system can be accessed by the international level, so that is known as the internet. Okay, it is useful to searching a data. How it is working? Internet is working with the help of web browser. What is a browser? For going for the web browser, first we need to understand what is a
search engine. Okay, because search engine is having a web browser. Search engine may, like suppose this is today, and now today Google is a very big and bad search engine because bulk of people are using this one in a day. तो गूगल सबसे बड़ा सर्च इंजन है आज की डेट में, आपको सबको पता होगा. आपको कुछ भी ढूंढना होता है, यू आर गोइंग फॉर द गूगल. इधर इफ यू वांट टू ड्राइव समवेयर, यू आर टेकिंग अ हेल्प ऑफ द गूगल मैप. ओके, सो गूगल सबसे बड़ा सर्च इंजन है. तो हर एक सर्च इंजन अपने रिसोर्स को प्रोवाइड कराने के लिए, मीन्स अपनी चीज़ को कन्वीनियंट बनाने के लिए एक ब्राउज़र रखता है. ब्राउज़र क्यों होता है मैं आपको बताती हूँ बेटा. ब्राउज़र की हेल्प से आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो उस सर्च इंजन को. ठीक है, जैसे ओपेरा है आपका. ओपेरा पहले चलता था, बस नाउअडेज क्रोम इसका वेब ब्राउजर है क्रोम, आपने सुना होगा. ठीक है, पहले ओपेरा चलता था. नाउअडेज यूसी ब्राउजर इज आल्सो अ थिंग फंक्शन. ओके, यूसी ब्राउजर है, ओपेरा है. तो ये क्या है, ये एक वेब ब्राउजर है जो कि पर्टिकुलर थिंग पे वर्क करते हैं. ओके, पर्टिकुलर थिंग पे वर्क करेंगे. तो ये क्या है बच्चे, इसका कोई सर्च इंजन प्रॉपर नहीं है, ये किसी भी सर्च इंजन पे वर्क कर लेगा. यूसी ब्राउजर का प्रॉपर इसका याहू से कांटेक्ट रहता है. याहू इज अ काइंड ऑफ आल्सो सर्च इंजन, सो इट इज आल्सो कनेक्ट विद द, यू कैन से यूसी ब्राउजर इज अ मींस वेब ब्राउजर ऑफ द याहू, यू कैन से दिस थिंग. बट ओपेरा इज अ मल्टीपर्पज यूज, देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन एनी सर्च इंजन. आप किसी भी सर्च इंजन, इसका मतलब ये नहीं है कि दैट इज नॉट अ वेब ब्राउजर, इट इज अ वेब ब्राउजर, बट आप किसी में भी इसको यूज कर सकते हो, है ना. बट क्रोम इज हेल्पफुल फॉर द गूगल सर्चिंग. ओके, सो बेटा दिस इज अ वेब ब्राउजर व्हिच हेल्प टू सर्च द नेटवर्क. ओके, कि उससे क्या होता है कि थोड़ा कंपेटेबिलिटी बढ़ जाती है और चीज़ें इजी से सर्च हो जाती है, इंफॉर्मेशन इजीली शेयर हो जाती है. ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट नेटवर्क कम्युनिकेशन चैनल. First we need to understand what is intranet. My dear students, intranet is a network that exists exclusively within an organization, and this is the base of internet technology. ठीक है, as from clear itself, an internet is a network that exists exclusively within an organization, and that is based on internet technology. कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है और ये डिपेंड करता है, इसकी क्वालिटी डिपेंड करती है कि आपने इसको इंटरनेट स्पीड कितनी दी हुई है. इंटरनेट सिस्टम पे डिफरेंट जगह आपके सिस्टम कनेक्टेड रहते हैं. ओके, और ये एक सेम रिसोर्सेज से कनेक्ट रहते हैं. लाइक वी कैन से दैट दिस इज यूज्ड फॉर द शेयरिंग योर डेटा. ओके, ठीक है. Now dear student, we were talking about network communication channel. First is network communication channel. Network communication channel means first is twisted pair. Twisted pair cable, and second is coaxial cable, third is optical fiber cable, the next is long distance wireless media, that we will discuss later on. Now today we will discuss what is a network communication channel. Twisted pair cable and coaxial and optical. Twisted means can you ever see that dish cable, dish antenna which is connect with the set of box? So that is also resources for the satellite to convert your communication with your TV. So that cable is known as twisted pair cable. Coaxial is smaller, and optical fiber cable is just like that. And here the small beam is present for passing electricity. So ये three types of the cable है. These are the resources for the internet. Means these are helpful for the communicate. You are sharing your data from one to other. Now we will talk
talk about the wireless networking technology. First is microwave, long distance wireless media. As the term is clear, wireless. So that is means wireless कितने तरीके का होता है? Means wireless means कि wire free. It is wire free networking system. That is known as wireless networking system. Long distance में microwave, radio and satellite होते हैं. This is divide between long distance and short distance. If you are talking about the long distance, we have microwave, रेडियो वेव. देखिए अगर आप दूरी की बात करें तो वेव्स ही सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं क्योंकि ये एयर में एग्जीक्यूट करती हैं और इनका डायरेक्टली कनेक्शन हो जाता है. ठीक है, तो वेव्स जो होती हैं दिस इज वेरी हेल्पफुल रिसोर्सेज फॉर द वायरलेस मीडिया. ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द शॉर्ट डिस्टेंस. शॉर्ट डिस्टेंस में वी हैव इंफ्रारेड. इंफ्रारेड तो आपने देखी होगी बच्चा, वी आर यूजिंग इन योर टीवी में जो आपकी निकलती है जिसके थ्रू आप चैनल चेंज करते हो. लेजर बीम होती है, ये आपको पता होगी. ठीक है, ब्लूटूथ है एंड देन वाईफाई है. ये सब आपको पता होगा बिकॉज दीज आर बेसिक यूजेस. ब्लूटूथ से हाउ कैन वी शेयर द डेटा, वाईफाई से हाउ कैन वी शेयर द डेटा, एंड इंफ्रारेड एंड लेजर का क्या वर्क होता है. ठीक है, सो नाउ वी हैव फिनिश्ड द चैप्टर एंड डायरेक्टली वी गो फॉर द क्वेश्चन आंसर. Okay, so in my next lecture I will tell you how to do the question answer. I'll tell you all the answers so that you can do in your copy. And still you have any problem, you can call me. Student, now our syllabus has been completed, so we will start step by step. In weekly we will start the test. Means 1 week may we have 1 test. Okay, so meet in another lecture. That's all for today. Thank you so much.